Hey students, hi everybody, welcome to the very session. My name is Preksha Sharma, your English educator at Unacademy, and I give you all a very warm welcome herein, wherein we are going to do the revision of the tenses. So it's gonna be an important session for everybody right in there. Please make sure that you all are listening to me very carefully. Also, please make sure that you all are just indulging into the session because the session would really be helpful for all of you. It will be telling you all like what exactly the tenses are, how exactly we need to go ahead with them, and what are the key things that you all need to keep in your mind. Alrighty, people. So please make sure that you all are just understanding everything bit by bit. Also, please give me a confirmation in the comment section that I am clearly visible and audible to everybody right in there. Alrighty, people. I hope that I am clearly seen and like audible to everybody right in there. So the session is going to be an informative one wherein you'll be getting an idea like how to go ahead with the best kind of understanding. Okay, so please make sure that you all are sharing the link of the session with all your friends and make sure that you all are understanding bit by bit of whatever I am going to tell you all. Okay. So I'm sure you guys know my name pretty well. I am Preksha Sharma, your English educator at Unacademy. And the thing is that I have been guiding you all for quite some time to be really good in your com skills and to make sure that you guys are doing really well in terms of like maintaining a balance between your academic English and your practical English. Okay. All right. This is a very important thing. Please keep it in your mind. Okay. Is that making sense, everybody? Alrighty. Yes, people. Alrighty, people. So I hope that everything is going good with all of you, and you guys have been like practicing very much extensively also. Moving ahead, revision of tenses, it's gonna be an important session. बेटा देखो tenses मैंने आपको हमेशा बताया है, they are the foundation. आपका basically वो base होता है जो बहुत strong होना चाहिए. अगर आपके tenses strong नहीं है, so that means कि कहीं ना कहीं you are lacking in forming the good sentences. अगर आपको कहीं बोलना भी पड़ता है, that means that you're not able to speak well. So if you want to flourish in all these things and if you really want to do all these things so well, you have to go ahead with the right kind of understanding, and that comes only and only when you are doing the things the right way. It really does matter. Alrighty. So please do not leave the tenses just like that. Just pay proper attention to them, and please make sure that you are trying to make certain small sentences whenever you are dealing with English. I mean, I have always been saying आप जितना practical हो जाओगे English को लेके, English आपसे प्यार करने लग जाएगी. So that means कि आपको बोलते बोलते आप सीखोगे. तो दिस इज इम्पोर्टेंट दैट यू स्पीक, और इसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए आपके एग्जाम में जैसे एडिटिंग के फॉर्म में कुछ आ सकता है, या फिर आपका जैसे जब आप आंसर्स लिखते हो किसी भी क्वेश्चन का, अपने लिटरेचर चैप्टर्स में से ही जब आप आंसर्स लिख रहे होते हो, सो उसमें भी ये दिक्कत होती है. सो यू बेटर अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन अ गुड वे फॉर योर ओन सेल्फ. ठीक है. अब टेंसेस क्या होते हैं, मैंने बात आप लोगों को पहले भी समझा रखी है, अभी मैं आपको फिर से ये सेशन इसलिए लेके आई हूँ जिससे कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट को लेके. अब एक बच्चा है जो बोलता है हे वेयर वर यू येस्टरडे. यहाँ पे ये जो वर यूज हुआ है, इससे मुझे पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है मुझे इससे, इससे मुझे ये पता चल रहा है कि मैं यहाँ पे पास्ट की बात कर रही हूँ. यहाँ पे प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे उस टाइम की बात हो रही है जो बीत चुका है. ठीक है. सो वेयर वर यू येस्टरडे ऑल्सो एक टर्म है. ठीक है. एडवर्ब ऑफ टाइम है ये बेसिकली. येस्टरडे आपको दे रखा है, तो उससे मुझे ये आइडिया मिल गया कि मैं कल की बात कर रही हूँ. तो टाइम पीरियड में जब मुझे ये पता चला कि बात कल की हो रही है, उसको मैं बोलती हूँ पास्ट टेंस. अब जो दूसरा फ्रेंड है वो बोलता है आई वॉज एट माई फ्रेंड्स हाउस, शी वॉज 6. ओके. सो यहाँ पे वॉज दे रखा है, यहाँ पे वॉज दे रखा है. ठीक है. अब इससे मेरे को पता चल गया ना कि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है. ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को हर क्वेश्चन आंसर्स में बोलती हूँ आपके लिटरेचर से रिलेटेड, अगर आपने अभी मेरे रिसेंट सेशंस अटेंड करे हैं तो वहां पे ये मैंने बहुत क्लियरली और प्रिसाइजली मेंशन किया है कि अगर क्वेश्चंस आपके देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यहाँ पे जो सॉरी जो क्वेश्चन है आपका वो पास्ट टेंस में पूछा गया है. सो अगर क्वेश्चन पास्ट टेंस में पूछा गया है तो यहाँ पे आंसर भी आप पास्ट टेंस में दोगे. इसका मतलब ये होता है कि जब आपके एग्जाम में भी कोई लिटरेचर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, अगर उसका आपको टेंस चेक करना होता है, टेंस कंसिस्टेंसी इज समथिंग दैट रियली मैटर्स. इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग दैट, आपके मार्क्स लूज होते हैं. सो डोंट लेट दैट हैपन.
ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ये पास में दे रखा है, ये भी पास में दे रखा है। हे वेयर वर यू येस्टरडे, एडवर्ब ऑफ टाइम लगा रखा है, येस्टरडे वर लगा दिया। आई वॉज एट माई फ्रेंड्स हाउस, शी वॉज सिक, तो यहाँ पे भी वॉज लगा दिया। आपको पता चल गया दैट वी आर डीलिंग विद द पास्ट टेंस। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लाइक ही आस्क्ड, क्या बोलता है वो, अब ये बोलता है हमको लाइक इज शी ओके नाउ। तो आपने देखा यहाँ पे शिफ्ट कैसे हुआ, लाइक शी सेज इज ओके, इज शी ओके नाउ, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, इज आपका क्या है प्रेजेंट, एंड नाउ इज गिवन है। नाउ ही सेज शी विल बी बेटर इन अ कपल ऑफ डेज, सो विल लगा दिया उन्होंने। So what do we see everybody? Like we are always using the form of tenses, the form of verbs are being used in order to tell you कि आप present tense की बात कर रहे हो या आप past tense की बात कर रहे हो या आप future tense की बात कर रहे हो। समझ में आ रही है ये बात? देखो ये थोड़ा एक important concept है, हमें इसे serious level पे समझना होता है। आपके एग्जाम में कभी भी मार्क्स कटते हैं और while you are speaking you are being judged, you are being judged on the basis of these things and you have to take that a bit more seriously। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से इन चीजों को अगर कंसिडर करोगे तो आपके लिए ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, got that? जैसे I was at my friend's house, she was sick, hey where were you yesterday, is she okay now, she'll be better in a couple of days। So all these things you have to be like very serious about। ठीक है, ओके। आप देखो बेसिकली टेंस क्या होता है, टेंस रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट का क्या मतलब होता है कि ये शो करता है, ठीक है, ये डिपिक्ट करता है। क्या डिपिक्ट करता है, ये डिपिक्ट करता है फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि आप कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हो वर्ब की, वो ये डिपिक्ट करता है। जो हमें बताता है टाइम एट विच एन एक्शन हैपन, जिससे कि हमें ये पता चलता है वो वाला टाइम जब एक एक्शन जो है वो हुआ था। ठीक है, जब एक एक्शन हुआ था वो चीज हमें पता चलती है। ऑल राइट, आप जैसे अगर मैंने आपको बोला दैट आई स्लेप्ट एट 9 o'clock लास्ट नाइट, और आई एट एन एप्पल ओके इन द मॉर्निंग, और आई विल बी गोइंग फॉर लंच, तो आपको सारी चीजें कैसे पता चलती हैं, हमें कोई भी ये सारी चीज कैसे पता चलती है कि कोई काम हुआ था या कोई काम होगा। ऑल राइट, सो नाउ दिस इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन योर माइंड। इज दैट क्लियर एवरीबडी? समझ में आई ये बात? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर्ड एवरीवन। ओके, ठीक है। सो आप लोगों को ना हमेशा ये पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस कहाँ पे यूज हो रहा है, और वो धीरे धीरे ही आता है हमको जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अनलेस यू आर प्रैक्टिसिंग, ठीक है, अनलेस यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, इट विल बी बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर यू टू कंसिडर इट द करेक्ट वे। ठीक है, सो बी वेरी कीन एट डूइंग द थिंग्स एंड दैट टू द राइट वे, बिकॉज दैट रियली डज मैटर। ठीक है, अब टेंस से मुझे क्या पता चला, पहले तो मुझे पता चल गया था टाइम ऑफ एक्शन यानी कि कब क्या हुआ। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे ये पता चल गया स्टेट एक्सप्रेस बाय द वर्ब, कि क्या एक्सप्रेस हो रहा है, एज एन लाइक कि कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है, टाइम तो पता ही चल गया। उसके साथ साथ ये भी पता चला ना कि हुआ क्या था, लाइक खाया था, सोया था, भागा था। ऑल राइट, सो ये सारी चीजें, या भागेगा, सो ये सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं। समझ में आई everybody? Did you all get that, like what I am here talking about? So these are the aspects, just keep it clear in your mind। अब हमारे कितने फॉर्म्स होते हैं टेंसेस के, ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखी है। ऑल राइट, अभी मैं आपको ये बात फिर से बता रही हूँ। जैसे देखो यहाँ पे हमारे कितने टेंसेस होते हैं, 3 टेंसेस होते हैं हमारे ब्रॉड। ठीक है, ब्रॉड कैटेगरी 3 टेंसेस होती हैं। जो ब्रॉड कैटेगरी है ना उसमें आपको 3 टेंसेस मिल जाएंगे। एक आपको मिल जाएगा प्रेजेंट टेंस, एक आपको मिल जाएगा पास्ट टेंस, और एक आपको मिल जाएगा फ्यूचर टेंस। ये तीनों टेंसेस होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। प्रेजेंट टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, अगर मैंने बोल दिया नाउ, जैसे अभी मैं आपको बोल रही हूँ आई एम टीचिंग, तो ये मेरा प्रेजेंट टेंस है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ऑल राइट, अगर मैं पास्ट की बात करूंगी तो मैं पास्ट को जर्नली रेफर करूंगी येस्टरडे से, यानी कि कल जो बीत गया। फिर फ्यूचर टेंस मेरा होगा क्या, जो मैं बात कर रही हूँ आने वाला कल, यानी कि टुमारो की बात हो रही है, दैट इज व्हाट फ्यूचर टेंस इज। So it says now, then it says yesterday, then it says tomorrow. All right, these are the things that you need to always keep in your mind, and that is how you just make yourself also understandable, no? कि अच्छा ये tenses हमें दिक्कत नहीं होती है। All right, okay. इज दैट मेकिंग सेंस? सो कीप इट इन योर माइंड, क्योंकि बात ये है कि बच्चे ये मतलब उनको इसी चीज में कंफ्यूजन हो जाती है
कि क्या कहते हैं ये सही है या नहीं है, मैं कौन सा टेंस यूज कर रहा हूँ। सीधी सीधी बात है, जो अभी की बात हो रही होगी, ऑल राइट, वहां पे आप ये क्या कहते हैं प्रेजेंट टेंस ही यूज करोगे। जो कल की बात हो रही होगी वहां पे आप पास्ट टेंस ही यूज करोगे। जो आने वाले कल की बात हो रही होगी वहां पे आप फ्यूचर टेंस यूज करोगे। ठीक है, तो ये वाली चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अब हर एक टेंस की 4 ब्रॉडर कैटेगरी होती है जो आपको याद रखनी है। एक होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस, तीसरा हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऑल राइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा क्या होता है, जहां पे आपका एक नॉर्मल एक्टिविटी की हम बात कर रहे होते हैं और हम उसको यूज कर रहे होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, दैट्स इट। ठीक है, जब नॉर्मल अगर मैं बोल रही हूँ लाइक ईट, स्लीप, ओके, गेट अप, और आई एम सेइंग राइट, लर्न, यानी कि इन वाले केसेस में आपकी जो ये वर्ब होती है वो बिल्कुल आपके रूट फॉर्म पे डिपेंड करती है। ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि हम किसी चीज की कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव क्या होता है, प्रोग्रेसिव होता है जब मैं किसी प्रोग्रेशन की बात कर रही हूँ, यानी कि अगेन मैं किसी चीज की कंटिन्यूटी की बात कर रही हूँ, कंटिन्यूटी में चल रहा है या फिर वो प्रोग्रेशन है उसका, आई मीन दैट इज जस्ट गोइंग ऑन। All right, so these are the two things that you have to keep in your mind. Don't be ever confused in your like examination or in your life whenever this term progressive comes up, because the term progressive itself like means that we are here talking about what, like we are here talking about the progression, the continuity of something. Okay, is that making sense, everyone? All right. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैं भी आपको समझाऊंगी कि परफेक्ट हमारा ज्यादातर डील करता है काम कंप्लीट होने से। ठीक है, यानी कि एंड, यानी कि फिनिश, इस चीज से वो डील कर रहा होता है, लाइक खत्म होना या एंड होना या फिर कंप्लीट होना। दैट इज बेसिकली नोन एज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दैट्स व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। Then we have present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense is a tense which basically talks about the continuation from like a point. मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन ये बात ध्यान से समझ लो कि जितने भी सारे हमारे टेंसेस होते हैं उनकी 4 ब्रॉडर कैटेगरीज होती ही होती है। एक सिंपल टेंस, एक फिर कॉन्टिन्यूस टेंस, एक परफेक्ट टेंस और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये चारों कैटेगरीज आपको प्रेजेंट में भी मिलेगी, आपको पास्ट में भी मिलेगी, आपको फ्यूचर में भी मिलेगी। All right, is this like making sense to you? Alrighty, clear? अब हम चलते हैं हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरफ। देखो इसका जो टर्म सिंपल दे रखा है ना वो इसलिए दे रखा है, यहाँ पे वी आर जस्ट डीलिंग विद द सिंपल एंड द नॉर्मल एक्टिविटीज। ठीक है, अब आपको ना देखो बेटा, कोई भी इंसान ना टेंसेस अच्छे से तब तक नहीं कर सकता जब तक उसे वर्ब की फॉर्म्स नहीं पता है। तो अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट गुड इन द फॉर्म्स, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लग रहा है कि सॉरी यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म है या सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन बेटा आप सबको यही है, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द फॉर्म्स इन द करेक्ट वे बाय लर्निंग देम द राइट वे। क्या करो आप इसके लिए, आई विल सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप अपना एक क्या कहते हैं लिस्ट बना लो। ठीक है, या तो इफ यू वांट यू कैन टेक आउट अ प्रिंट, आप प्रिंट आउट निकलवा लो, या फिर आई मीन आई विल नॉट रिकमेंड कि लिखो इतना सारा, एक प्रिंट आउट निकाल के अपना क्या कहते हैं टेबल पे रख लो, जहाँ पे आप यूजुअली पढ़ते हो, आपके बेड के साइड में रख लो, आपके स्टडी रूम में रख लो, सामने वॉल पे हैंग कर दो, बट डू समथिंग अबाउट इट। ओके, इट्स लाइक रियली इंपॉर्टेंट, कुछ इसके बारे में डेफिनेटली करो, दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कीप इट इन योर माइंड एवरीबडी। ओके, सो प्लीज फॉर्म्स को लर्न करो, बिकॉज फॉर्म्स लर्न नहीं करते हो ना तो प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है। ऑल्सो फिर जब आप क्या कहते हैं टेंसेस का यूज करते हो ना रिपोर्टेड स्पीच में, वहां पे भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट, इन ऑर्डर टू नॉट फील इट, इन ऑर्डर टू गेट ओवर विद इट, प्लीज उसको रीड करो डेली बेसिस पे, सामने वॉल पे हैंग कर लो या अपने सामने रख लो एंड रीड इट ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, उसको ना क्रैम नहीं करना है, यू नॉट गोना क्रैम इट, जस्ट लर्न इट ऑन अ डेली बेसिस. Sorry, just try to read it on a daily basis, because if you're gonna cram it, you're gonna forget it, and I don't want you guys to forget it, because the entire life English is going to be a lifelong companion, and you would need the words with you so that you can speak well. And that can happen only and only if you're getting into the habit of seeing it on a daily basis and using it in your practical life.
ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा मैं एक जेन्युइन एडवाइस दे रही हूँ आप लोगों को, जस्ट फॉर योर ओन गुड, गो अहेड विद इट एंड डू नॉट एट ऑल जस्ट ट्राई टू लाइक डू एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम इट। ठीक है। सो ये किस लिए यूज किया जाता है? इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस योर डेली टास्क, मतलब आपकी रोजमर्रा की टास्क को एक्सप्रेस करने के लिए, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए, ठीक है, और फैक्ट्स के लिए। All right, just like if I'm talking about certain facts, like certain truths which are like real and true, उस केस में you go ahead with these things. ठीक है। इन sentences को बनाने के लिए you are always going to add s और es to the root verb if the subject is singular. आपको ये बात बहुत ध्यान से समझनी है। बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है मैं यहाँ पे एस ऐड कर रहा हूँ या ई एस ऐड कर रहा हूँ, ये तो प्लूरल हो गया। नहीं, ये चीज दिमाग से हटा दो। आपको अगर मैंने ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अभी मैं 2 बजे करवाऊंगी तो उसे मिस मत करना, बी राइट देयर। ठीक है, मैं आई हैव कम अप विद दी सेशंस ऑन अ रेगुलर बेसिस, जिससे कि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि क्या हमारे टेंसेस, आई मीन क्या ग्रामर पोर्शंस हैं जिस पे आपको रियल में कॉन्सेंट्रेट करना है। देखो, यू कैन ऑलवेज अपेयर फॉर द क्वेश्चंस, ठीक है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक, यू कैन ऑलवेज बी देयर फॉर द क्वेश्चंस। हाउएवर, आई मीन यू कैन अपेयर फॉर द क्वेश्चंस, बट आपका जो फाउंडेशन, आपका जो बेसिस है, लाइक जो आपका रूल्स है, बेसिक्स जो है, दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। ठीक है। सो यहाँ पे एस और ई एस आप ऐड करते हो। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है सो ऑफ कोर्स हम उसमें एस या ई एस ऐड करते ही करते हैं। लेकिन बेटा अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो द रूट वर्ब जो होता है वो एज इट इज ही रहेगा। वी आर गोइंग टू कीप द रूट वर्ब द वे इट इज। All right. Examples here are being given like she eats ice cream. So she is like a plural, sorry, a singular verb in the subject. इसलिए यहाँ पे मैं s ऐड कर रही हूँ। लेकिन जो they है वो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं प्लूरल वर्ब को ऐड कर रही हूँ। Now the sun is given to us which is again singular, और यहाँ पे sets दे रखा है which is like s। Why? क्योंकि द सन जो है वो सिंगुलर है, इसलिए मैं यहाँ पे सिंगुलर वर्ब को ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? समझ में आया सबको? तो आप ये देखो कि हम एस कहाँ ऐड करते हैं, हम ई एस कहाँ ऐड करते हैं। जितने भी वर्ड्स आपके कॉन्सोनेंट साउंड से एंड होते हैं, जितने भी वर्ड्स आपके लाइक वर्ड्स ऑल राइट एंडिंग विद, वर्ड्स दैट आर एंडिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड, वहां पे आप एस से, एस उसमें लगा, जैसे सेट हो गया, गेट हो गया, ऑल राइट, इसमें ट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो मैं एस लगा रही हूँ। हाउ एवर जितने भी वर्ड्स आपके वोवल से एंड होते हैं, जो भी वर्ड्स आपके वोवल से एंड होते हैं उसमें हम ई एस लगाते हैं। और जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोला गो, मैंने आपको बोला डू, तो ये वोवल से एंड हो रहे हैं, इसमें आप ई एस लगाते हो इनको सिंगुलर बनाने के लिए। समझ में आई ये बात? Also, the other point that has to be kept in your mind is like if there is a word, all right, which is ending from like two letters, not words, two letters, all right, and the sound is consonant. दो letters हैं लेकिन जो sound है वो consonant है, of course उसमें आप फिर es लगाते हो। For example, अगर मैंने आपको बोला watch, ये च sound आ रही है which is actually a consonant sound and it is made up of two letters, C and H. सो इस केस में आप क्या लगाओगे, आप ई एस लगाओगे। अगर मैंने आपको बोला टीच, ठीक है, तो सी एच है तो उसमें भी आप ई एस लगाओगे। तो कीप इट इन योर माइंड। ऑल राइट, समझ में आई ये बात सबको? दैट इज हाउ यू आर गोना गो अहेड विद इट। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? गॉट दैट? समझ में आई? देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे आप एस लगा रहे हो, ई एस लगा रहे हो, तो ये रूल को याद रख लो। All right, I am again repeating it for all of you. If a word is ending with the consonant sound, add s to it in order to make singular. If a word is ending with a vowel, all right, then you have to add es to it in order to make it singular. And if a word is ending with like two letters giving a consonant sound like ch sound, ch made up of two letters, in that also you add es in order to make it singular. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। तो जितने भी आपके डेली टास्क होते हैं, लाइक आई गेट अप एट 8 o'clock, आई ड्रिंक कॉफी, ही ड्रिंक्स कॉफी एट 8 AM इन द मॉर्निंग, और माई मम कुक्स ब्रेकफास्ट बिफोर आई गो टू ऑफिस, और माई डैड प्रिपेयर्स जूस फॉर मी बिफोर आई गेट अप, लाइक दैट। ओके, जो आप डेली टास्क की बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स की बात कर रहे हो, जैसे यहाँ पे एक बेस्ट एग्जाम्पल दे रखा है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, उसमें हम लोग ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अगर कुछ
फैक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल रही हूँ माई मदर कुक्स अमेजिंग साउथ इंडियन फूड, ओके, सो वहाँ पे भी मेरा फैक्ट है ये, मतलब मेरे आसपास के एरिया में, मेरे नोन एरिया में, मेरे रिलेटिव्स में, मेरे फ्रेंड्स में, they all know this that my friend, oh sorry, my mom, she prepares the best delicious food. Okay, that is what we are going to talk about. Now we are moving to the next tense, which is what, which is the present continuous या फिर progressive tense. ठीक है, सो प्रोग्रेसिव बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे मैं बात कर रही होती हूँ किसी चीज की प्रोग्रेशन की. प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है, लाइक विच इज जस्ट गोइंग ऑन. ठीक है, दैट इज लाइक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू मेक इट लाइक अंडरस्टैंडेबल टू ऑल ऑफ यू कि प्रोग्रेशन क्या होता है. प्रोग्रेशन होता है लाइक गोइंग ऑन, मतलब समथिंग जो चल रहा है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस. ठीक है, जो है मेरा प्रोग्रेशन. ओके, एक्शन और इवेंट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. ऐसा एक्शन या कोई एक ऐसा इवेंट जो हो रहा हो आपके बोलने के टाइम पे. जैसे अभी मैं एक बेस्ट एग्जांपल यही देती हूँ, आई एम टीचिंग यू आर लिसनिंग. मैं पढ़ा रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हो. तो ये वाली जो चीज है ये चल रही है ना, मतलब दिस इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ. ठीक है, मतलब ये चल रहा है, गोइंग ऑन. So that is what we are talking about. If something is in a continuous state, if something is like going on, what do we talk about in this context? Like it says like it is basically your present continuous tense. Okay? Action or event which is happening at the time of speaking. इन sentences को बनाने के लिए आपके दिमाग में ये clear होना चाहिए, आप is, am, are auxiliary verbs का use करते हो. ठीक है, auxiliary verbs हमारी क्या होती हैं, auxiliary verbs हमारी helping verbs होती हैं. ठीक है, आप ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज करते हो और साथ में आप वर्ब का रूट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हो. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड. ठीक है, जैसे कि आपने आईएनजी लगा दिया रूट वर्ब में. एग्जांपल मैंने आपको दिया, दे आर स्विमिंग. आर लगाया, वर्ब स्विम है, आपने आईएनजी ऐड कर दिया. फिर यहाँ पे शी है, ठीक है, इज लगाया, फिर ईट एंड देन आईएनजी. ठीक है, मोनिका इज एंड देन अटेंड एंड देन आईएनजी. English class. So like this is something which is happening at the time of like speaking. So anything which is happening at the time of speaking is basically known as your present continuous tense. All right, keep it in your mind. It's an important point that we need to consider every time we are dealing with it. All right, it really is important. Okay, is that clear to everyone? Alrighty, let's get going towards the next tense, which is the present perfect tense. Perfect tense is a tense which deals with the ending of something. It deals with the finishing of something. Okay, like something got finished, like that, like ended or finished, that way. और ये हुआ होता है हमारे recent past में. रीसेंट पास्ट का क्या मतलब होता है बेटा, रीसेंट पास्ट होता है आपका इमीडिएट पास्ट. दैट मीन्स ज्यादा टाइम नहीं हुआ है. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला दैट आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट. ठीक है, तो मैंने क्लास से पहले अपना ब्रेकफास्ट खा लिया था, उसमें ज्यादा टाइम नहीं हुआ है. All right, so something that has just ended, all right, in your recent past, or if we are talking about it like in the immediate past, then we go ahead with the present perfect tense. All right, for example, like if I am saying that I have finished my homework, right, like what has been mentioned here. So this is have plus third form of the verb and then comes your object. So how are we going to make this sentence? It's like a very important point, people. Present perfect tense का अपना sentence structure ध्यान में रखो. Sentence structure ध्यान में रहेगा तो आपके लिए भी easy रहेगा. Sentence structure क्या रहता है, has या have plus we see third form of the verb. अब मेरा यहाँ पे फिर से थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. उसके लिए फिर से मैं यही रिकमेंडेशन दूंगी, प्लीज लर्न करो वर्ब्स को. ठीक है, जितना आप पढ़ोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा. ऑलराइट, सो हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. Like if I say she has already seen the movie, so this is has plus seen. All right, and this is have plus first third form of the verb. So you have to keep these things in your mind. Now I hope you have taken a note of whatever I've written on the slide. Now telling you all, has is a verb, okay, which is used, again it's an auxiliary verb. That is why we are writing the third form of verb with it, and usually with has just comes the third form of the verb. With has we like has is being used in order to use the singular form of the verb, and have is being used in order to use the plural form of the verb. So these are the 2 points that you have to keep in your mind. All right, just keep this clear in your mind. Here it says I have finished my homework, she has already seen the movie. That's what we are going to talk about. Okay, is that clear to everybody?
Got it? Right? So keep it in your mind and we can make, and this is an exception, ठीक है? I के साथ हम हमेशा have use करते हैं. Alright, you के साथ भी आप हमेशा have use करते हो. बाकी he, she और it के साथ हम लोग has use करते हैं. ऑल राइट, और यहाँ पे वी के साथ भी आप हैव यूज करते हो, यानी वी दे तो प्लूरल हो गए, तो प्लूरल के साथ मतलब हैव जो है वो प्लूरल के साथ ही आता है. हाउएवर विद आई एंड यू इज लाइक टेकन इनटू समटाइम्स द न्यूट्रल कैटेगरी, तो हम उसके साथ भी हैव यूज करते हैं, हम आई के साथ भी हैव यूज करते हैं, और ही शी इट के साथ तो हम हैज ही यूज करते हैं. दैट्स व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड. ठीक है? क्लियर एवरीबडी? समझ में आगे बात? ऑल राइटी, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस की तरफ, विच इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में समझने के लिए एक बहुत अच्छे से आपको अपना भी फोकस यहाँ पे लगाना है. देखो ये ना दो टेंसेस से बनता है, एक तो बना है प्रेजेंट परफेक्ट से, ठीक है, दूसरा ये आया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. दो टेंसेस के साथ ये हमने बनाया है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ. प्रेजेंट परफेक्ट के केस में बेटा आपको क्या करना होता है, आपको पता है, आप लगाते हो हैज या हैव प्लस आप लगाते हो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट? वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, आप लगाओगे हैज, अगर सिंगुलर हुआ नहीं तो हैव लगाओगे, लेकिन उसके साथ जो थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं ना, वो हम लगाते हैं बी की, और वो फिक्स्ड है, वो आप लगाओगे बीन. तो आपने लगाया हैज, आपने लगाया हैव, उसके साथ आपने लगा दिया बीन. समझ में आई बात? आपने लगाया हैज, आपने लगाया हैव, उसके साथ लगा दिया बीन. प्रेजेंट परफेक्ट तो आपका डन हो गया. अब हमारा आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. तो कॉन्टिन्यूस में हमारा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही रहता है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. अब इज एम आर तो मैं लगाऊंगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि हैज हैव ऑलरेडी लगा दिया है, तो उसके साथ मैं वर्ब का रूट फॉर्म लगाऊंगी और उसके साथ आईएनजी. ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. ठीक है? समझ में आ रही की बात? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहता है? दिस इज लाइक एन important point. Once again I am telling you all, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर यही रहता है, दैट यू आर एडिंग प्रेजेंट, सॉरी, यू आर एडिंग हैज हैव plus third form of the verb, and with that will come your continuous form of the verb, which is first form of the verb plus ing. Okay, so keep it in your mind. It's like an important thing I am mentioning right in here. ऑल राइट, सो इसके साथ अब आप ये समझो कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो यूज कहाँ होता है. ये बात मैं अब आपको समझा रही हूँ. देखो अभी आपका जो भी टाइम हो रहा है, ध्यान से समझना, एग्जाम्पल देके समझाऊंगी जिससे कि आप लोग कभी भूलो ना. अभी 11:30 हो रहे हैं, ठीक है, मैं सुबह 9 बजे से पढ़ा रही हूँ और अभी 11:30 हो चुके हैं, और अब मैं शाम तक भी पढ़ाने वाली हूँ. ठीक है, मैं बोलूंगी दैट आई हैव बीन, ठीक है, मैंने लिखा आई हैव बीन टीचिंग, ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 9 o'clock. मैं 9 बजे से पढ़ा रही हूँ. अब यहाँ पे क्या है, हैव लगा दिया मैंने, बीन मैंने लगाया ये बताने के लिए कि मैं कंटिन्यूटी में पढ़ा रही हूँ और टीचिंग. लेकिन 9 तो अब पास्ट हो गया ना, आज की डेट में 25 नवंबर, ठीक है, अब वापस से इस साल 25 नवंबर 2022 का वापस नहीं आएगा. लाइक इट्स जस्ट नाउ गोइंग, इट्स लाइक बिकमिंग पास्ट. सुबह के 9 अब पास्ट हो गए हैं, अब कल का 26 नवंबर की डेट में 9 बजेंगे. ठीक है, डू यू ऑल अग्री विद मी? सो एनीथिंग दैट स्टार्टेड एट अ पॉइंट इन द पास्ट, ठीक है, कभी भी पास्ट हो सकता है, 2 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले, या फिर 6 साल पहले भी पास्ट हो सकता है. लेकिन उसमें कंडीशन, जो एक सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है, जो जिससे आप लोगों को सारा समझ आता है, दैट इज नाउ. यानी कि जो चीज आपकी पास्ट में स्टार्ट हुई थी, अगर उसका कनेक्शन आपके अभी से है, यानी वो चीज अगर अभी भी चल रही है, तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बताया था, समथिंग दैट गॉट कंप्लीटेड, राइट? मैंने अभी आपको ये लास्ट स्लाइड में बताया, लेकिन उसके आगे कंटिन्यूस लगा दिया ये बताने के लिए कि पास्ट में कुछ स्टार्ट तो हुआ, वो कंटिन्यू रहा, लेकिन वो खत्म कब होगा, वी डोंट नो अबाउट इट. मैंने ये बोला है दैट आई हैव बीन टीचिंग सिंस 9 o'clock टुडे, तो मैं 9 बजे से पढ़ा रही हूँ, लेकिन वो कब खत्म होगा, यू आर नॉट कंसर्न अबाउट इट, यू डोंट इवन नो अबाउट दैट. So that is what your present perfect continuous tense is. Like it got started at some point in the past, however it is in continuation till now, that means till your present. Okay, so that is how you have to be like very much concerned about. Okay,
Got it everybody? समझ में आया? Clear? So in order to make this sentence, as I said, this is what you're gonna follow. You're gonna write has or either have, depending upon the verb that you're choosing. Then with that will come been, and then with that will come the first form of the verb, and with that will come the ing form of the verb. Okay, so keep it in your mind, has, have, been plus ing added to the root verb. For example, Poonam, here it goes. For example, sorry, yeah. For example, it says Poonam has been learning. You have not been attending the lecture since last Monday. So that is how you need to go ahead with it. Now, just keeping this in mind, everybody. Alrighty, here we go. Okay, just have a look at it, everyone. Okay, so what are the things that I wanted to tell you all, like where exactly do we use since and for? This is something that you need to be like a bit more serious about. हम लोग since का use कहाँ करते हैं और हम लोग for का use कहाँ करते हैं? That is what you need to keep in your mind. सिंस का यूज हम लोग करते हैं जब हम किसी पॉइंट को रेफर करते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम. जैसे मैंने आपको बोल दिया, इफ आई एम सेइंग सिंस मॉर्निंग, or if I am saying since afternoon, or if I am saying like since evening. So these are the things that you need to keep in your mind, like morning, afternoon, or evening. That is what where we use since, like I am specifying a point of time. However, for is something that you use, just a minute everybody, yeah. So for is something that we use for a duration. Okay, keep it in your mind. For आप कब use करते हो? When we are dealing with a duration. जब भी आपका duration होता है. Like for example, if I'm saying 2 hours, if I'm saying 3 hours, like that. If I'm talking like in this very particular tone, then of course we go ahead like what I have mentioned here as. ठीक है? Is that clear to everybody? इज दिस क्लियर? सो सिंस और फॉर का बहुत बड़ा यूज होता है. कभी कभी आपके एग्जाम में जैसे गैप फिलर्स आ जाते हैं, आई मीन जैसे फिल इन द ब्लैंक आ जाता है, वहां पे आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. तो दीज टू लाइक preposition since or for will always give you an indication that whether it's like a present perfect continuous or like present perfect. Okay, you won't be like confused therein once you will just see it. ठीक है, समझ में आ जाएगी आपको ये बात अच्छे से. All right, got it? अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ. एक्सरसाइज नंबर 1, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. आपको अब कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे मोहिनी plays cricket. You have been visiting her for almost a month. He has completed all of his daily chores. She is not working right now and they are not studying. So you can take a minute and just think about it, all right, and then we are gonna make a move with it. Okay, so just try to attempt these questions so that you get an idea like what exactly it is being said and how exactly we need to go ahead with it. Okay, this will give a perfect idea to you. Alrighty, let's get going, everybody. Here we are. Just look at it, you'll get that, everyone. Try to give it a shot, everyone. Okay, everybody. So yes, of course, the correct answer is plays is given as your simple present, right? That's right. And then you have been visiting. Have been visiting is your present perfect continuous. He has completed. Okay, present perfect. Alrighty, that is absolutely right. And she is not working is your present continuous. Just look at the verbs, like whenever you are being told to see, like what kind of a sentence it is. Always look at the verb, like that is very important.
Now, like they are not studying. Studying is what? Studying is basically referred to as your present continuous. So these are the things that you always need to keep in your mind. Now, here we go, everybody. So this is the answer. Like these are the answers that are being given for all of you. Now we are moving to the next thing. Okay, let's have a look at it, everybody. Alrighty, here we go, guys. So yeah. So now we have the next tense, everyone with us, and which is sorry, no, the next exercise with us. Fill in the blanks using the correct form of the present tense. तो यहाँ पे मैंने आपको already verbs दे रखे हैं on the basis of the very sentence, and you get to know. आपको हमेशा जब भी कोई fill in the blank fill करना होता है ना, so you always look for the actual, I mean the complete sentence. Complete sentence देखोगे तो हमेशा समझ में आ जाता है like what exactly we are talking about. So tell me like what exactly is the right answer, and then we're gonna discuss this. So see, here it is like come. So Tanya is दे दिया. So इससे मुझे यहाँ पे पता चल गया यहाँ पे coming आएगा. यहाँ पे has आ गया है मुझे पता है. अब यहाँ पे third form of the verb भी आनी है. has के साथ third form of the verb आनी है. Water at 100 degree Celsius ये एक universal fact है. Water boils at 100 degree Celsius. They have the before. So यहाँ पे have आया. Of course do का मेरे को यहाँ पे क्या आएगा? Third form of the verb आएगी. ठीक है, keep it in your mind. Then she is not is आ गया. So यहाँ पे dance है. So this is of course going to be the dancing. Keep it in your mind. All these things are very important. You better understand these things right. Right, Mamta? Absolutely. You're right about it. So all the answers have been given here. Just make sure that you are just giving it a look. Okay. Now the past tense, we have got like again the four categories in the past tense. I had told you all that the categories, they are always same whenever we are dealing with them. So first is like the simple past tense. The second is the past continuous or the progressive tense. The third is the past perfect tense, and the fourth is the past perfect continuous tense. So again, these are all same as it was in the case of your simple present tense. It was dealing with just one of the simple activities. Simple past tense talks about like one of the simple events that took place in the past. Then we have the past continuous progressive tense, which again talks about something that like existed in the past, like that. Okay, like something that was in continuation. Perfect again deals with the completion of a task, like a task ended. Okay, it got finished. However, I'll explain you what exactly it is. Okay. Then the past perfect continuous. तो सबकी categories हमारी same. Okay, Pratishtha got that. I was just taking your name via what was displaying here as Mamta Mishra. Anyway, all right. So it says past perfect continuous tense. So that is how you need to be very careful about. अब इसमें हमारी क्या क्या चीजें use होती हैं? That's what you need to tell me. ठीक है, पहला है it is used to express the actions that happened in the past. ऐसे actions जो कि past में हुए थे. ओके या फिर पास्ट हैबिट्स को लेके कुछ भी होता है लाइक दैट इज वेयर वी कॉल लाइक फॉर एग्जांपल एट हो गया स्लेप्ट हो गया गॉट हो गया और डांस्ड हो गया और वी सी एक्साइटेड और वी सी इरिटेटेड all right, so these are the words. Usually the words ending with ed, they are always having the second form of the verb. So we are simply talking about the things that happened in the past. That is where the simple past tense comes up. Okay, now we see like for example if I'm saying it often comes with adverb of time and sometimes without it. तो कभी कभी आपको जो सिंपल पास्ट टेंस है ना वो ज्यादातर कभी कभी आता है आपके एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ और कभी कभी उसके बिना भी आता है. इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करते हैं. एग्जाम्पल आप ले लो जैसे मिस गुप्ता वर्कड इन कोलकाता और ही केम होम लेट लास्ट नाइट. सो केम इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. So these are the things there that you will have to keep in your mind whenever you're talking about the simple past tense. As I said, the word simple shows that we are dealing with like the very simple activity. ओके आप बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ों की क्या कहते हैं ध्यान रख रहे हो चीज़ें लाइक सिंपल एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हो. सो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू बी लाइक वेरी केयरफुल अबाउट. हे पूनम हाय डियर वेरी गुड मॉर्निंग. ठीक है, सो इसमें आपको सिंपल एक्टिविटीज आप सिंपल आप ना ये सिंपल पास्ट टेंस को ज़्यादा अच्छे से तब समझते हो जब आप उसको अपना डेली लाइफ में थोड़ा इनकॉर्पोरेट करने लग जाओ, मतलब उसको यूज़ करने लग जाओ जिससे कि आपको मतलब हेल्प अच्छी होती है समझने में आपके किसी भी एग्जामिनेशन में. लाइक इफ यू बीइंग गिवन एनी क्वेश्चन it helps you. ठीक है, like if you're being given any question in your examination, it helps you in understanding in a bit more better manner. ठीक है,
नेक्स्ट इज योर पास्ट कॉन्टिन्यूस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस, जैसे कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ये यूज किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए एक्शंस दैट स्टार्टेड बिफोर अनदर एक्शन एंड स्टिल गोइंग ऑन। ऐसे एक्शन जो स्टार्ट हुए थे किसी और एक्शन से पहले और अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला दैट आई वाज प्रिपेयरिंग द फूड व्हेन मम्मा वाज कॉलिंग मी, सब जब मम्मी मुझे कॉल कर रही थी, मैं ना खाना बना रही थी। तो अगेन इट टॉक्स अबाउट समथिंग लाइक इन अ गोइंग ऑन स्टेट, इन अ कंटिन्यूटी वाला स्टेट। So whenever like something like that happen, like when we are talking about anything in a continuity wala state, then we always take it to be in a continuous or a progressive manner. So you better not forget it. It's an important point I'm making here. So these deal with the situations in the past. In sentences को बनाने के लिए you're always going to add ing to the root verb. For example, I was not studying when she called me. मैं नहीं पढ़ रही थी जब उसने मुझे कॉल किया। और they were trying. इन sentences को बनाने के लिए आपको क्या रहता है, वहां पे हमने present continuous में क्या यूज किया था? What did we use? Hi रंजना, हमने present continuous tense में क्या यूज किया था? is mr प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing। यहाँ पे आप यूज करोगे was और were प्लस आप यूज करोगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing। ठीक है, कीप इट इन योर माइंड, इट्स ईदर वॉज और वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing। कीप इट इन योर माइंड क्लियरली। ऑल राइट, एन important point to be considered. Now we are moving towards the past perfect tense. ये एक बहुत important tense है, यहाँ आके बच्चे बहुत दिक्कत खाते हैं। तो you understand this, आपको कोई भी यहाँ पे पॉइंट क्लियर नहीं होता है, you better ask me that, that's gonna be good for you. ओके कोई भी एक ऐसा एक्शन जो दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड कंप्लीटेड माई असाइनमेंट बिफोर माई टीचर asked फॉर इट। So anything, any action which get completed, all right, any action that like gets completed without before the other action, all right, before another action, that is where we take it to be the past perfect tense, and that's like an important thing I am mentioning to all of you right now. In order to make this sentence, you are going to add had, then you are going to use had plus third form of the verb. प्रेजेंट परफेक्ट में हमने यूज किया था हैज और हैव। ठीक है, हाँ मैंने आपको बताया था हैज यूज होता है सिंगुलर के साथ, हैव यूज होता है प्लूरल के साथ। पास्ट परफेक्ट टेंस में आप हैड यूज करोगे एंड इट इज यूज विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। आप ये दोनों के साथ यूज कर सकते हो, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। और उसके साथ जो वर्ब आपकी यूज होती है वो होती है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, कीप इट इन योर माइंड, you use had or you use like sorry you use had and with that you use the third form of the verb. ठीक है, क्लियर है ये बात? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? गॉट दैट? समझ में आ गई? ठीक है, सो एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, जैसे कि इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमने हैड यूज किया और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन ये बात बहुत जरूरी होती है आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में समझने की, कि आप हमेशा इस चीज को कंसिडर कर रहे हो कि एक एक्शन ओके जो कंप्लीट हुआ दूसरे एक्शन से पहले, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं लाइक वी हैड नॉट मेट बिफोर, हम लोग पहले नहीं मिले थे। ठीक है, हैड आ गया, ठीक है, उसके साथ आपने लगा दिया मेट, ओके हो गया। ठीक है, नाउ शी हैड सॉल्व्ड ऑल द सम्स इन द एक्सरसाइज, सो इट इज हैड प्लस सॉल्व्ड विच इज व्हाट, विच इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, so this could be made like this, like she had solved all the sums in the exercise before her teacher checked her notebook. ठीक है, इज दैट क्लियर? सो एक काम को होने से पहले दूसरा काम हो जाए उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इज एन एम प्लस आई एन जी प्रेजेंट टेंस में एंड वॉज प्लस आई एन जी। हाँ वेरी गुड पूनम, वेरी राइट 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 पूनम, ग्रेट। ठीक है, अब हमारा आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या बताया था मैंने, कि मैं सुबह 9 बजे से पढ़ा रही हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 9 o'clock इन द मॉर्निंग टुडे। तो वो पास्ट हो गया, आज की 25 तारीख में जो सुबह के 9 बजे थे वो अब पास्ट हो गया, वापस से आज की 25 तारीख 2022 में 9 नहीं बजने वाले हैं सुबह के, दैट्स गॉन। तो कोई ऐसी चीज जो आपके पास्ट में स्टार्ट हुई थी 9 बजे, पास्ट कुड बी एनी, लाइक 10 साल पहले भी हो सकता है, 10 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले भी हो सकता है। ठीक है, सो वहां से कनेक्शन अगर आपके नाउ से होता है उसको मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहती हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, यानी कि कुछ ऐसी चीज जो मेरे पास्ट में एक पॉइंट से पहले स्टार्ट हुई थी और उस पॉइंट तक वो कंटिन्यू रही, आगे कहाँ तक गई मुझको नहीं पता, एंड आई डोंट इवन नो अबाउट इट, लाइक आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट। ठीक है,
उसको आप बोलते हैं past perfect continuous. So action that had begun and continued up to some point in the past. इन sentences को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम had लगाते हैं, had के साथ हम लगाते हैं been, और been के साथ हम लगाते हैं first form of the verb plus ing. जैसे कि मैंने बताया कि ये sentences जो हैं दो sentences से बना है. एक तो जैसे present perfect में present perfect plus continuous, यहाँ पे past perfect plus past continuous. That is how it is being made. All right, keep it in your mind. So it's had, okay, plus been plus first form of the verb plus ing. This is how you need to keep it in your mind. Am I clear on this to everybody right in there? All right, so action that had begun and continued up to some point and past. इसको आप लगाओगे had been plus आप लगाओगे ing to the root verb. जैसे I had been waiting for half an hour. She had been trying to meet the principal. That's what you need to keep in your mind. ठीक है? Is that clear everybody? Do you get that? समझ में आ रही है बात? हैड लगाओगे, साथ में बीन लगाओगे बेटा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाओगे, आईएनजी ऐड करोगे. वैसे ही आप ये जैसे, और जैसे कि मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी आपका सबसे बड़ा रोल किसका आता है. ओके, आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा. लेट मी जस्ट क्लियर इट अ बिट. ठीक है, सिंस का और फॉर का. सिंस मैं फिर से बता रही हूँ, हम यूज करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. ठीक है, जब एक पर्टिकुलर टाइम आपने बता दिया, सिंस इवनिंग, सिंस नून, सिंस नाइट, सिंस येस्टरडे, सिंस डे बिफोर येस्टरडे, आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बता रहे हो. फॉर हम फिर से यूज करते हैं ड्यूरेशन के लिए. जैसे मैंने बोला दैट आई हैव बीन वेटिंग फॉर द permission for 6 weeks. ठीक है, तो 6 weeks is made up of like a lot of weeks, 1, 2, 3 and so on. So that is where comes your duration. So that is where it's past perfect continuous. It's clear. Okay, your name is Akshita. Okay, thank you, Akshita. I was again about to say Ranjana. Alrighty, clear? Okay. Now just let's do a little bit of exercise kind of thing. Identify whether the given statement is simple past, past perfect, past continuous or past perfect continuous tense. So we have got 5 sentences right in here. Tell me what is the answer for first one, second, third, fourth and fifth. Kanika performed well in exams. They had been trying to learn swimming for almost a month. He had taken care of his mother well. She was not eating a balanced diet. They were not singing. Hey, hi Akash. Hi Tulip. Hi dear. Akash, write it like this, like one this, two this. Write it like this so that I'll have a good understanding what you're writing. Okay? Go ahead that way. Identify whether the given statement is simple past, past perfect, past continuous, or past perfect continuous tense. What exactly is the right answer? Hanika performed well in exams. They had been trying to learn swimming for almost a month. He had taken care of his mother well. She was not eating a balanced diet. They were not singing. Okay. All right, so the first one is your simple past that we are going to talk about. Second is had been trying. Beta Akash had been trying. अभी बताया ना, had been और ing form of the verb है. साथ में देखो ना, they had been trying to learn all swimming almost for a month. Duration भी दे दी है. So the second one is your past perfect continuous. The third one is your past perfect. Very good. Had taken is being given here. I agree with all of you in that case. The fourth one is she was not eating a balanced diet. Past perfect continuous. Yep, Akriti, absolutely correct. The second one is the had been trying, which is past perfect continuous. And the fourth one, she was not eating a balanced diet. What are we gonna write in here? Past perfect continuous. Acha, okay, I'm sorry. All right, Akash. Okay. Akriti says past perfect. And the fourth one, she was not eating a balanced diet. Okay, here we go. She was not eating a balanced diet and they were not singing. Okay, perfect continuous and were singing. All right, here we go. So this is your past continuous. Absolutely correct. So the answers have been given here to everybody. Okay, now the next set of exercise. Fill in the blanks using the correct form of the past tense. Adil dashed well in competition. Muskan had dashed starting for almost an hour. Gurdeep had not dashed the entrance test. They were not dashed well after dinner. Poonam was dashed on the couch. So what's gonna be the right answer? Quickly, everybody in the comment section. Let's do it a bit quicker.
Okay, Adil did. Akriti says, okay. Okay, did. What about others, everyone? Been, all right. Did. Okay. The third option, Gudeep had not. What is it? Passed, all right. They were not dash. Okay, they were not feeling well after dinner. Yeah, Poonam was dash on the couch. All right, so this is like did. Okay, Muskan had been. Okay, Gurdeep had not passed. Since had is given here, and we know do का third second form did होता है. Were आएगा of course feeling के साथ. They were not feeling well after dinner. Poonam was sleeping on the couch. Okay, that's what we are gonna do here. Yep, absolutely correct. So all the answers have been given here. So we are done with the past tense also. Though two tenses are being covered, the present and the past. Now the very last tense, which is your future tense. Okay. So we are going ahead with again the four categories. One is your simple future tense. The second is your future continuous or progressive tense. Third is your future perfect tense. And the fourth one is your future perfect continuous tense. All right, so these are the four categories which are really important for all of you to go ahead with. Let's see that how we are gonna deal with it. Okay, so simple future is like again when you are dealing with the simple kind of activity, okay, like future tense. And future continuous is again like the simple thing that you're gonna take here sorry, that you're gonna deal here with. Perfect is like simple again, not simple, sorry, future continuous is not simple, I mean basically that is like the continuity that we are dealing with. Okay, like you are dealing with the continuity like mostly. Okay, just a moment everybody. Yeah, when you are dealing with the continuity. Alrighty. Then we have the perfect tense, okay, when you are dealing with the completion of something, like completing things. All right, like ending. Okay, but when is it ending? It's gonna be ending in the future. Okay. And then the future perfect continuous tense. All right. Of course, something that would be taking place in the future. All right. And then that would be in a continuity state. Like it will start at some point in the future. It will continue in future. However, we are not aware of the fact that when it's gonna be ending. Okay. So that is what we do not know. All right. Is that clear to everybody? Okay. So simple future tense is something which is used to express the future events in happening. I mean the things that are taking place in the future. That is where we go ahead with the simple future tense. In order to make these sentences, what do? Like we write will, shall, plus we write the first form of the verb with it. Okay, this is just a simple activity. All you need to do is you have to take care of will or shall. And will or shall, all right, they act as what? They are basically the auxiliaries. क्या है ये हमारे लिए? ये auxiliary verbs हैं. Auxiliary verbs कौन सी verbs होती हैं? Like the verbs which are basically the helping verbs. उन्हीं को हम auxiliary verbs बोलते हैं. ठीक है, सो ये सिंपल फ्यूचर की बात हो रही है. इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप विल शेल लगाते हो, उसके साथ आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऐड करते हो. ठीक है, एग्जाम्पल जैसे रियांश विल कम टू माई होम टू सेलिब्रेट. सो दिस इज विल, all right, plus come. Okay, that is what you have to be careful about. I shall go to the police to report such a crime. You're talking in a very simple context. जैसे कि अगर मैंने आपको बोला that I will take a class at 2 p.m. Okay, or like the students will attend the class at 5 p.m. today, or the teachers will the teachers will conduct an important seminar tomorrow at 10 a.m. in the morning. So these are all the important aspects that we are reflecting upon, and hence you have to be very careful about it. Okay, all right, so you should know कि ये simple activity है या ये major activity है या इसमें क्या दे रखा है. ये सारी चीजें आपको clear होनी चाहिए. On the basis of that, you go ahead with the usage of the right kind of tenses for yourself. ठीक है, ठीक है. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस, इवेंट्स विच विल बी कंटिन्यूइंग इन द फ्यूचर. ऐसे इवेंट्स जो कंटिन्यू होंगे फ्यूचर में. इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप हमेशा विल ऐड करते हो, विल के साथ आप बी लगाते हो और उसके साथ आप ऐड करते हो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. दैट्स व्हाट यू डू इन दीज सेंटेंसेस. ठीक है, विल लगाया, विल के साथ बी लगाया, प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया और उसके साथ आईएनजी लगाया. दैट्स व्हाट यू गोना डू. ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मोहित विल बी पिकिंग मी अप ऑन मंडे, दे विल बी गोइंग टू द बहामास नेक्स्ट मंथ. तो जो भी चीज एक कंटिन्यूटी में होगी, ठीक है, इसमें बी को नहीं भूलना है.
अगर आप बी को भूल रहे हो तो दैट मीन्स आप गलती कर रहे हो। और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके क्या कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच में भी। वहां पे जैसे मैंने कल सुबह आप लोगों का सेशन लिया था, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का, वहां पे मैंने आपको ये चीजें बहुत अच्छे से बताई थी कि आपको क्या करना है। आपको जब जैसे क्वेश्चन दे दिया, the teacher said they will be conducting the seminar together, तो बच्चों ने क्या किया, the teacher said that they would conducting the seminar the next day or like that day, whatever it is, time and place से कनेक्शन जो भी है। लेकिन बी वहां पे बच्चे भूल जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता क्यों। ऐसी गलतियां मत किया करो। रिपोर्टेड स्पीच में इन चीजों का ध्यान रखा करो कि कौन सा टेंस किस टेंस में कन्वर्ट हो रहा है। इफ यू नो लाइक विच टेंस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू विच सेंटेंस, इट विल बी बिकमिंग इजी फॉर यू, ठीक है। क्योंकि वहां पे मैंने कल आपको ये बहुत बेसिक तरीके से बताया है सुबह सुबह कि हमको क्या किन चीजों का ध्यान देना होता है जब मैं रिपोर्टेड स्पीच से डील कर रही होती हूँ। तो यू बेटर रिमेंबर दैट इन द करेक्ट वे। ऑलराइटी, इज दैट क्लियर? हे निखिल, हाय डियर, वेलकम टू द वर्क क्लास। नाउ लेट्स गेट गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टेंस व्हिच इज द फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट जहां पे भी आएगा ना वो हमेशा बात करेगा एंड करने का काम, कंप्लीट करने का काम। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर लगा दिया तो यानी कि आने वाले कल में जो काम कंप्लीट होगा। तो इवेंट्स विच विल हैपन इन फ्यूचर, ऐसे इवेंट्स जो कि फ्यूचर में होंगे और वो एक सर्टेन टाइम पीरियड तक खत्म हो जाएंगे। इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप क्या करते हो, आप विल लगाते हो। विल के साथ हैव लगाना जरूरी है और हैव के साथ आप लगाते हो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। हैज हैव का यूज हमेशा होता है। आपके प्रेजेंट में हैज हैव लग रहा है, आपके पास्ट में लग रहा है हैड, और क्योंकि फ्यूचर में ऑक्सिलरी लग रहा है, विल के साथ कभी भी आप हैड या हैज नहीं लगाते हो। विल ऑलवेज टेक्स विद इट हैव। ऑलराइट, कीप इट इन योर माइंड, विल के साथ हमेशा ही हैव आएगा। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपने विल हैव लगाया, उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया। जैसे you will not have completed your work by tomorrow, they will have eaten their lunch by 2 p.m. So this is important, will plus have. All right, am I clear? सबको समझ में आ गई ये बात? Yes guys, hi Dhirendra, hello dear, hi Krishna. समझ में आया future perfect? Is this clear everybody? Is it clear to everyone? Yes everybody, right? चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस की तरफ विच इज अवर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस। ये एक्सप्रेस किया जाता है जब मैं प्लान्ड एक्शंस, यानी कि मैं ये बोल रही हूँ दैट आई विल हैव बीन सिंगिंग टुमारो। मैंने ये प्लान किया ना कि कल तो मैं इस वक्त ना मतलब कंपटीशन में मतलब सिंग कर रही होगी। सो दिस इज समथिंग यू नो दैट यू हैव प्लान्ड इट ऑलरेडी, ठीक है। आपको ऑलरेडी, क्योंकि फ्यूचर है, फ्यूचर तो अभी हुआ नहीं है ना हो गया, आई मीन फ्यूचर तो अभी चल नहीं रहा है ना ही हो गया है, यू दैट इज अबाउट टू कम, सो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ योर प्लान, ठीक है। इसलिए हम इसको यहाँ पे प्लान एक्शन की कैटेगरी में डालते हैं। So events that will happen at the fixed time and will continue up to some time, that is where we call it to be the future perfect continuous progressive tense. All right, जैसे इसमें आपने लगाया will have been, इसका ये जरूरी है, ध्यान से समझो। will के साथ have लगेगा, have के साथ आप लगाओगे been, perfect वाला फॉर्म। मैंने बोला ना हमेशा been तो लगेगा ही लगेगा continuous में। All right, Dhirendra, that's what I'm doing, dear Nikhil. I've already said hi to you. Why are you spamming in the class now? Alright, उसके साथ आप लगाते हो ing form of the verb. जैसे the Choi will have been singing tomorrow. She will have been waiting for 3 years. So आपने लगाया will plus आपने लगाया have plus आपने लगाया been plus आपने लगाया first form of the verb plus ing. ठीक है? Keep it in your mind. Alrighty. Is that clear everybody? समझ में आया? चलिए फिर हमारा एक आता है गोइंग टू। गोइंग टू बेसिकली क्या होता है, ये फ्यूचर प्लान्स के लिए यूज होता है या फ्यूचर अरेंजमेंट्स के लिए। सो ये बेसिकली यूज होता है किसी ऐसे काम का रिजल्ट जो आपके प्रेजेंट एक्शन के बेसिस पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोल रही हूँ दैट आई विल नॉट टैकल दिस काइंड ऑफ अ नॉनसेंस, ओके, सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू टैकल दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस। तो बिकॉज यू डिड समथिंग नॉनसेंस, आपने किया, एक एक्शन किया, उसके बेसिस पे रिजल्ट क्या आया, मैंने आपको डाटा कि मैं ये टैकल नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वेयर यू यूज गोइंग टू, लाइक इट इज बेस्ड ऑन योर प्रेजेंट एक्शंस। So I am going to scold her for this silly mistake. The bus is not going to leave until 5 p.m. That is how what exactly the thing is. ठीक है? Exercise people. Identify whether the given sentence is simple future, future perfect, future continuous or future perfect continuous. 5 sentences are given to you.
She will have finished her tennis practice by noon. I will not be attending the meeting. Don't worry, I'll take good care of you. By next month, Nayan will have been asking for justice for 2 months. He is not going to cry on the stage. Jaldi se answer do इनके क्या answers हैं. Quickly, everybody. Yes, everyone. Quickly tell me what's gonna be the answer. A, B, C, D. I mean, sorry. 1, 2, 3, 4, 5. क्या answers हैं? Tell me, everyone. Hi, Ashmita. Hello, dear. Okay, first one Akriti says, ठीक है, आपका ये future perfect है क्योंकि will have finished आया. Will plus have plus आपका आ गया third form of the verb. ठीक है, clear है. All right, feature should be always used by in the end to show completed action. Yeah, हाँ पूनम, yes, we do that. Usually आपको मिलेगा. मतलब आपको खुद फ्रेम करना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आपको इंडिकेशन चाहिए अपने क्वेश्चन में, आई मीन आपके एग्जामिनेशन में कि ये फ्यूचर परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, वहां वो आपकी हेल्प करता है वो प्रेपोजिशन. ठीक है. ऑल राइट, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है. ठीक है, विल नॉट बी अटेंडिंग. और ये आपका नॉर्मल सिंपल फ्यूचर है. नयन विल हैव बीन आस्किंग, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है. एंड ही इज नॉट गोइंग टू क्राई इज बेसिकली द going to send, that is your future. So answers, they are being given to you. Next question. Fill in the blanks using the correct form of future tense. They will not have dashed their budget by dinner. I will dash to the park tomorrow. She will not be dashed to me anymore. By next year, Rupali will have been dashed for 3 years. Kunal is dashed the supermarket next Friday. What are we gonna write in here? It's 1, 2, 3, 4, and 5. What are the answers, everybody? Quickly tell me. What are the answers here? They will not have dashed their budget by dinner. I will dash to the park tomorrow. She'll not be dashed to me anymore. By next year, Rupali will have been dashed for 3 years. Kunal is dashed the supermarket next Friday. Quickly tell me the answers in the comment section, everybody. Okay, Fibber, can we use shall in place of will? हाँ बेटा आप कर सकते हो आकृति, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. Calculated going, ठीक है, absolutely. I will going to the park tomorrow. कनक मैंने यही बताया था एक important point अभी. I will be, right? Be लगाओगे ना, जरूरी है. That's an important thing. She will not be listening, okay, to me anymore. By next year, Rupali will have been working. All right, Kunal is going. Okay, yes. So these are the answers which are given. So we are done with the tenses, everybody. I hope everything is clear to you. Now an announcement, you know, CBSE class 6 to 12 special price offer is going on. Get up to 45% on your CBSE class 6 to 12 subscriptions, unlimited access to the live and recorded classes, structured batches and courses, in-class doubt solving by top educators, live tests and quizzes would be there. All you need to do is you have to make use of my code PSH10 because it's a limited period offer. All right, go ahead with this. It's gonna be really, really helpful. For example, if you just try to go for 6 months, okay, the cost is 15,199. However, you're gonna pay like 8,549 and you're gonna save 6,650, which is like 44% of your savings. You can give it a shot for another things also. Like for example, for 18 months, it's like 30,499. What you're gonna pay 20,249. What you're gonna save is 10,250, which is 34% of the savings. Similarly, for Iconic, if you go for 6 months, it's gonna be like 22,483, the current price, and what you're gonna pay is 13,049 rupees, and what you're gonna save is 9,434 rupees, which is like 42% of your savings. Similarly, for 18 months, it's like 46,288, the current price. What you're gonna pay is 31,049. What you're gonna save is 15,239, which is 32% of the savings. So you can subscribe right away by using my code PSH10. Do not waste your time. You're gonna get a lot out of it. The course is already going on Plus, and you can come under my guidance. Therein you'll be getting like more attention. You can just ask your doubts while talking to me, and I'll be definitely giving you the exact time and the required time that you need. All your doubts would be cleared as well. We have the linguistic batch for grammar, Hindi and English. It got started on 17 November for class 10. You can make use of my code for your betterment. Lakan sir, Akash sir, Vandana ma'am and Bhavna ma'am are there. And then we have Onshore division for math, science and social science. Use my code PSH10. This is for CBSE class 10 batch, got started on November 3. Mode of delivery is English. Vinay sir, Akshay sir, Himal sir and Hardik sir are there. Okay. Then we have answer writing batch and PYQs for math, science and social science. This is for CBSE class 9. Okay, November 10 it got started on. Mode of delivery is English. Vinay sir,
Hardik sir and Bhavna ma'am are there. Compete is there, battle and know where you stand, play one-to-one live question battles and improve your rating. It's live on the Unacademy Android app. So thank you everybody. Thank you Akriti. Thank you Poonam. Thank you everyone. Thank you for attending the very session. I hope you all loved it. Do not forget to attend the session which is there at the noon also. Do not forget to subscribe the channel if you're watching it for the first time. Hit the bell button and definitely like and share it with all your friends. I'm gonna catch up with you guys sooner. Take